सर्विस बिफोर सेल्फ। आज इस मोटो को फिर से सच साबित कर दिया 5 वीर जवानों ने। इन नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर हांडवारा एरिया टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर के वक्त आवर कंट्री लॉस्ट 5 brave hearts, and in this video we'll be discussing about every little detail about the हांडवारा ऑपरेशन ऑफ इंडियन आर्मी। तो अभी अभी न्यूज ये आई है कि 4 आर्मी पर्सन इंक्लूडिंग अ कमांडिंग ऑफिसर of the Rashtriya Rifle 21 Battalion and a sub-inspector of police from Jammu and Kashmir Police were martyred in an encounter with terrorists in Jammu and Kashmir's Handwara area. उसके साथ साथ 2 unidentified terrorists were also killed in the operation after the operation got over. So we'll be discussing every detail regarding the officers, the soldiers that we lost. Apart from that, we'll also be discussing जो operation की details हैं, sequence of events है, we will see all of that. So let's start, guys. सबसे पहले let us see the brave hearts that we lost. So commanding officer Colonel Ashutosh Sharma from 21 RR, that is Rashtriya Rifle, 19 guards, along with Major Anuj Sood, 21 RR, 19 guards, Naik Rajesh, 21 RR, and Lance Naik Dinesh, 21 RR. Apart from these, we also lost Sub-Inspector Shakil Qazi, who was from Special Forces Group, Jammu and Kashmir Police. Let's see कि ऑपरेशन क्या थी. So इनपुट मिली थी कि जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में ऑन 1 May 4 टेररिस्ट होने की इनपुट मिली थी. सो अ कंबाइंड टीम ऑफ 21 RR, CRPF एंड स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने साथ मिलकर एक ऑपरेशन स्टार्ट किया इन चंजमूला एरिया ऑफ हंडवारा. ये पता चलने के बाद ही जो भी टीम थी उसने उन टेररिस्ट का पीछा किया. फर्स्ट इनकाउंटर ये था. सेकेंड एनकाउंटर में दिस हैपेंड ऑन 1 May. सेकेंड इनकाउंटर हैपेंड ऑन 2 May 3:30 बजे दिन में सेकेंड एनकाउंटर स्टार्ट हुआ. फिर उसके बाद ये हुआ कि जो टेररिस्ट थे दे मैनेज टू गेट इनटू अ हाउस जिसमें पहले से सिविलियंस थे. अब उन सिविलियंस को रेस्क्यू करने के लिए अ टीम विच वाज लेड बाय कर्नल शर्मा, इट एंटर्ड द हाउस टू रेस्क्यू दोज सिविलियंस जो कि जिनको टेररिस्ट ने हॉस्टेज लिया था. प्रॉब्लम ये थी कि जो टीम थी दे हैड टू रिस्पॉन्ड क्विकली, सो दे वेंट इनकम्युनिकाडो, दैट इज विदाउट एनी कम्युनिकेशन, जिनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकती थी बाहर की टीम. दे सक्सेसफुली रेस्क्यूड द सिविलियंस अपने उनके घरों से. बट when they were returning, then they came under heavy fire while exiting the campus, because campus जो था that was open campus, and reportedly the soldiers lost their life, sacrificed their life at that moment. जब बाहर की टीम कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी अंदर की टीम के साथ, so they had to call on personal mobile number of Colonel Sharma, that is Ashutosh Sharma, which was picked up by one of the terrorists, and he answered actually the terrorists the call from Sharma's number. And then after that एक स्पेशल फोर्सेस को इंडक्ट किया गया इस ऑपरेशन को फिनिश करने के लिए. एंड उनके बीच में और टेररिस्ट के बीच में भी कुछ बेसिक फायरिंग हुई, थोड़ी बहुत फायरिंग हुई. एंड क्योंकि अंधेरा हो रहा था और बारिश भी हो रही थी, तो उसका फ़ायदा उठाकर टेररिस्ट भागने की कोशिश कर रहे थे, एंड उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन को होल्ड पर भी रखा गया था. बट जब टेररिस्ट भागने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पर ही स्पेशल फोर्सेस ने फायरिंग करी, एंड द 2 terrorists were killed and their bodies were also recovered. And after this operation got over, जो टीम थी, अंदर जो टीम गई थी, उनकी बॉडीज को भी रिकवर किया गया. ठीक है, तो ये थी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हुई थी. नाउ आई विल टेल यू गाइज अबाउट द पर्सनल्स, कर्नल आशुतोष शर्मा एंड मेजर अनुज सूद. इनके बारे में आई विल गिव यू अ ब्रीफ हिस्ट्री about brief insight about their life. So if we talk about Colonel Ashutosh Sharma, so he was a resident of Uttar Pradesh, Bulandshahr.
He was awarded Sena Medal for Gallantry not just once, guys. He was awarded Sena Medal for Gallantry twice in his life. He also received one of the gallantry awards that he received उन्हें तब मिला था जब उन्होंने एक मिलिटेंट को क्लोज रेंज से शूट किया था, वो भी तब जब उस मिलिटेंट के कपड़ों में ग्रेनेड छुपी हुई थी, राइट. सो दैट इज समथिंग रियली रियली brave and encouraging task to do, and of course for which he was awarded the gallantry award. He has a wife and a 12-year-old daughter, and they were survived by him only. So, yeah, this is about our brave Colonel Ashutosh Sharma. Let's talk about his status. Like, this will give you an insight on how which kind of person Mr. Ashutosh Sharma was. तो अगर आप उनकी स्टेटस भी देखोगे व्हाट्सएप पे, सो ही हैड स्टेटस हिम्मत को परखने की, गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूँ, राइट. सो दिस गिव्स यू एन इनसाइट कि कितने ब्रेव थे वो इन पर्सन एज वेल, राइट. नाउ मेजर अनुज सूद, he was a second generation officer and उन्होंने NDA Alpha Squadron 120 कोर्स में he was commissioned in Brigade of the Guards from Indian Military Academy 130 कोर्स. उनका सिलेक्शन IIT में हो गया था and still he preferred to join NDA, and later on he went to do his masters from MTech from IISc Bangalore. He topped all the classes in PPS NABA. He was the NDA torch holder for all the 6 terms, which is a unique distinction. This shows how brilliant and how bright this person was. Major Anuj Sood's father, who was also who's currently a retired brigadier, Chandrakant Sood, he said he has made a supreme sacrifice. It was a part of his duty and what he was trained for. I feel sad for his wife as he got posted just after 3-4 months after his marriage. He was meant to save lives. So you can understand and you can imagine the values जो उनकी family से ही उन्हें मिले थे. So of course there's no doubt how brave this person was. Now अगर मैं मेजर अनुज सूद ने एक recently एक post किया था where he described the life of a soldier in his own words, and I'm quoting, when you're older you will realize the only thing that matters, the only thing is that you had courage and honor. Lose those things and you won't die any quicker, but you'll be less than the dirt on your boots. You'll still be the dust, but you will have wasted your short time in the light. Such noble thoughts. Moving forward, fun fact is that Colonel Ashutosh Sharma and Major Anuj Sood, they knew each other since the IMA days of Major Anuj Sood only. When on a battalion trip to Jammu and Kashmir in 2011, Colonel Ashutosh was the officer in charge to brief the whole trip, and वहाँ पे इन दोनों की bonding काफ़ी अच्छी हो गई थी. And fortunately, Major Anuj was commissioned into the same battalion from which Colonel Ashutosh belonged, right? So this is how they met and they knew each other from the very beginning. Now the entire country definitely salutes these brave hearts, and we are very sad for them, and still we are very proud of all these जिन्होंने again हमारी motto को prove किया that service always comes before self. Okay guys, thank you for watching this video. Do share it with your friends. Jai Hind.